Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 9 science and here we are on the chapter 11 sound. ये हम complete chapter इस lecture में cover करेंगे all the concepts, formulae, like exercise questions, back exercise questions, everything. अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हो तो you can definitely score 100% marks in your exams, right? And if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel Learn with Nisha ji. And if you want to have online one-to-one sessions, you can fill up this form and register for the classes. Our team will connect with you, right? See, every day we hear sounds. Sounds आप different sources से सुनते हो जैसे humans से, birds, bells, machines, vehicles, television, radio. ये सब sources हैं जिनसे you hear some sounds. Okay. So sound is a form of energy which will produce a sensation of hearing in our ears, right? और भी different forms of energy हैं like mechanical energy, light energy, okay? Mechanical energy हमने previous chapters में देखी भी है, right? हमने conservation of energy में पढ़ा था कि we can neither create nor destroy energy, we can just change it from one form to other. Okay, so if you clap, okay, क्या होता है? A sound is produced. So can you produce sound without using energy, right? Which form of energy did you use to produce the sound? So in this chapter we are going to learn how sound is produced और वो कैसे transmit होती है through a medium and how it is received by our ears. ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, right? So let's see production of sound. एक activity के through हम देखते हैं. We take a tuning fork and set it vibrating by striking its prong on a rubber pad. Okay, bring it near to your ear. एक rubber pad लो, tuning fork का जो हमारा prong है, ठीक है, strike it like this. Okay, so then do you hear any sound? You have to observe. So touch one of the prongs of the vibrating tuning fork with your finger and share your experience with your friends. Right? Now suspend a table tennis ball or a small plastic ball by a thread from a support. Take a big needle and a thread like this. ठीक है, इसमें diagram में दिखा है. And put a knot at one end of the thread and then with the help of the needle pass the thread through the ball. Right? Touch the ball gently with the prong of a vibrating tuning fork. So क्या होगा? You have to observe this thing. So this is vibrating tuning fork just touching the suspended table tennis ball. Right? Another activity we have, fill water in a beaker or a glass up to the brim. ठीक है, हमने ये fill कर दिया. Gently touch the water surface with one of the prongs of the vibrating tuning fork. Okay. Next, you dip the prongs of the vibrating tuning fork in water and you have to observe what happens in both the cases. Okay. So we have to discuss what is happening actually here, right? So what you are doing? एक बार तो you are gently touching the water surface with one of the prongs और दूसरे में you are dipping the prongs, right? So let's see what happens. ये दूसरा वाला केस है हमारा जिसमें हमने dip किया है, right? So from these activities हम क्या conclusions draw करते हैं? Let's see. So can you produce sound without a vibrating object? That we need to check. So in above activities we have produced sound by striking the tuning fork. ठीक है, ये किया है हमने. So we can also produce sound by plucking, scratching, rubbing, blowing or shaking different objects. So as per the above activities, what do we do to the objects? We set the objects vibrating and produce sound. Okay? Vibration means a kind of rapid to and fro motion of an object. Right? Sound of the human voice is produced due to vibrations in the vocal cords. When a bird flaps its wings, do you hear any sound? So think how the buzzing sound accompanying a bee is produced. A stretched rubber band when plugged vibrates and produces sound, right? So if you have never done this, then do it and observe the vibration of the stretched rubber band. So you can make a list of different types of musical instruments and discuss with your friends like which part of the instrument vibrates to produce the sound. So कहीं ना कहीं vibration होगी जिसकी वजह से आपका sound produce होगा, right? Next, let us discuss the propagation of sound. So sound is produced by vibrating objects, right?
द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इट इज कॉल्ड अ मीडियम. ठीक है, जैसे मीडियम क्या हो सकता है, एयर कैन बी अ मीडियम, वाटर कैन बी अ मीडियम, जिसके थ्रू हमारी साउंड ट्रांसमिट हो रही है. तो वो जो मीडियम है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसा भी हो सकता है. ठीक है, साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर. जहां जनरेट हुआ वहां से लिसनर तक मूव करेगा. When an object vibrates, तो होता क्या है, it sets the particles of the medium around it vibrating. The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear. ऐसा नहीं होगा. A particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. It then exerts a force on the adjacent particle, as a result of which the adjacent particle gets displaced from its position of rest. Now, after displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position. So, this process continues in the medium till the sound reaches your ear. Okay. The disturbance created by a source of sound in the medium, it travels through the medium and not the particles of the medium. ठीक है, तो बेसिकली डिस्टर्बेंस मूव करेगी फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर, बट वो एक्चुअल में पार्टिकल्स नहीं मूव करेंगे. ठीक है, वो जस्ट यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोपगेट होती जाएगी. राइट. So a wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium set neighboring particles into motion. They in turn produce similar motion in others. ठीक है, particles of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward. ठीक है, this is what happens during propagation of sound in a medium. Hence, sound can be visualized as a wave. तो अब हम यहाँ पे sound को as a wave study कर रहे हैं. Sound waves are characterized by the motion of particles in the medium and they are called mechanical waves. Right? Air is the most common medium through which sound travels. ठीक है? When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. Right? This region is called compression. जैसे हम इसमें diagram में देख सकते हैं, vibrating object is creating a series of compressions and rarefactions in the medium. तो इसके just touching यहाँ compressions है. ठीक है? This compression starts to move away from the vibrating object. Now, when the vibrating object moves backwards, it creates a region of low pressure called rarefaction. As the object moves back and forth rapidly, a series of compressions and rarefactions is created in the air. These make the sound wave. Okay. So you can see CR. ये हमारे ऑब्जेक्ट के यहाँ पे बन रही है रीजन्स. ठीक है, सो बेसिकली हाई प्रेशर, कंप्रेशन वाली जगह हाई प्रेशर है, रेयरफैक्शन की जगह लोअर प्रेशर है. लाइक दिस रीजन्स आर फॉर्म्ड अल्टरनेटली. राइट. So these make the sound wave that propagates through the medium, and compression is the region of high pressure, rarefaction is the region of low pressure. And pressure is basically related to the number of particles of a medium in a given volume. So more density of the particles in the medium gives more pressure and vice versa. So propagation of sound हम कैसे visualize करेंगे इसे, as propagation of density variations or pressure variations in the medium. Right? So here comes a set of questions. How does the sound produced by a vibrating object in a medium reach your ear? तो आप इसमें पूरा concept explain कर सकते हो. How sound is produced by your school bell. This also you can explain through these concepts of vibration. Why are sound waves called mechanical waves? अभी हमने देखा है. You can write that reason. Suppose you and your friend are on the moon. Will you be able to hear any sound produced by your friend? No. क्योंकि इसमें एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है साउंड को मूव करने के लिए. ठीक है, तो मून पे मीडियम है नहीं, एयर इज नॉट प्रेजेंट देयर, वैक्यूम है. सो दैट्स व्हाई अगर आपका फ्रेंड कुछ बोल रहा है तो यू विल नॉट बी एबल टू हियर दैट साउंड. राइट. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. एक एग्जांपल देखते हैं. यू टेक अ स्लिंकी. ठीक है, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड, you hold the other end. Now stretch it. ठीक है, आप इसको stretch करोगे as shown. इसमें stretch कर रखा है. Then give it a sharp push towards your friend. What do you notice? If you move your hand pushing and pulling the slinky alternately, what will you observe? So if you mark a dot,
Okay, on the slinky, you will observe that the dot on the slinky will move back and forth parallel to the direction of propagation of the disturbance. ठीक है, तो regions जहाँ पे coils become closer, they are called compressions, and regions where coils are further apart are called rarefactions, right? So ये जो CR ये form हो जाएंगे. As we already know, sound propagates in the medium as a series of compressions and rarefactions. Now we can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagation in a medium. Okay? Now these waves are called longitudinal waves. In these waves, individual particles of the medium will move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. Right? Particles do not move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of rest. So this is the way in which the sound wave propagates, and hence sound waves are called longitudinal waves. अब एक अलग तरह की वेव्स भी होती है, उन्हें बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स. ठीक है, इनमें क्या होता है, पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, बट दे ऑसिलेट अप एंड डाउन अबव देयर मीन पोजीशन एज द वेव ट्रेवल्स. So a transverse wave वो होती है जिसमें individual particles of the medium move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation. और इस केस में longitudinal में parallel होता है. When we drop a pebble in a pond, waves आप जो देखते हो on the water surface, this is an example of transverse wave. ठीक है, light transverse wave होती है, but for light the oscillations are not of the medium particles or their pressure or density. It is not a mechanical wave. ठीक है, so transverse waves को और थोड़ा आप डिटेल में पढ़ोगे in higher classes. अभी हम अपना limited रखेंगे discussion to that sound waves are longitudinal waves. Okay. Next comes very important topic, characteristics of a sound wave. Sound wave को describe करने के लिए हम तीन basic characteristics use करते हैं, frequency, amplitude and speed. ठीक है, अब हम एक graphical form में देखेंगे sound wave को, which represents how density and pressure change when the sound wave moves in a medium. ठीक है, density as well as the pressure of a medium at a given time varies with distance above and below the average value of density and pressure. तो अभी हम देखते हैं ये डायग्राम में कैसे होता है. So we are seeing sound propagation as density or pressure variations. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे compression है, ये rarefaction, compression, rarefaction and so on. ठीक है, इस तरह से आप शो कर सकते हो pressure variations. Okay, compression में lines are nearby, rarefaction में they are far by. ठीक है, अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे डेंसिटी या प्रेशर को, सो इट विल कम एज समथिंग लाइक दिस, लाइक अ वेव. ठीक है, सो दीज रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ लाइक साउंड वेव एज इट्स प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम. तो कंप्रेशन कौन से रीजन्स है, वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर. ठीक है, एंड पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन. ओके, जैसे यहाँ पे आप पीक देखोगे ना, तो वहां पे मैक्सिमम है कंप्रेशन, यहाँ मैक्सिमम है, रेयरफैक्शन में नेगेटिव साइड जा रहा है. ठीक है, नाउ compressions are regions where density as well as pressure is high, or rarefactions are the regions of low pressure where particles are spread apart. They are represented by a valley ये वाले lower parts जो है. ठीक है, now पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट, ये इसका टेक्निकल वर्ड है. पीक, ये जो टॉप वाला पार्ट है इसको क्रेस्ट बोलते हैं. ठीक है, वैली इज कॉल्ड द ट्रफ, इसको ट्रफ बोलते हैं. क्रेस्ट और ट्रफ आपको पता होना चाहिए. डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड द वेवलेंथ. ठीक है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर है. ठीक है, और इसको वेवलेंथ बोलते हैं. यूनिट इसकी होती है मीटर्स में. राइट, frequency tells us how frequently an event occurs. Okay, suppose we are beating a drum, so how many times you are beating the drum in a unit time, it is called the frequency of the like beating of drum. Okay, so this is how we like represented graphically. तो आपने देखा है, this is a distance and this is density or pressure. lambda define हो गया इसमें, wavelength. ठीक है, crest और trough points define हो गए. ठीक है, दिस सेंट्रल पॉइंट इज द एवरेज डेंसिटी और प्रेशर. ठीक है, और ये ए होता है हमारा एम्पलीट्यूड. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पे रीच कर रही है. राइट,
Now we are seeing that the values are like oscillating between a maximum and minimum value. ठीक है? Change in density from maximum to minimum, then again to maximum, it makes one complete cycle of the oscillation. So per unit time कितने ऐसे oscillations हो रहे हैं, that is called the frequency of the sound wave. ठीक है? और आप क्या कर सकते हो, we count the number of compressions or rarefactions that crosses per unit time. वो भी frequency of sound wave होती है. ठीक है? फ्रीक्वेंसी को आप न्यू इससे लेटर से रिप्रेजेंट करते हो. दिस इज अ ग्रीक लेटर अगेन, वी जैसा दिखता है ये. एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है इसकी. ठीक है. अब देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ वेव क्या होता है. टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट. इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव. ठीक है. टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव. कैपिटल टी से डिनोट करते हैं ये. इसकी एसआई यूनिट सेकेंड्स है. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इस तरह रिलेटेड है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज अ वायलिन एंड अ फ्लूट may both be played at the same time in an orchestra. Both sounds travel through the same medium, that is air, and arrive at our ear at the same time. दोनों साउंड सेम स्पीड पे ट्रैवल करती हैं irrespective of the source, but the sounds we receive are different. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द साउंड आर डिफरेंट. ठीक है. एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ओके, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है. एक कैरेक्टरिस्टिक होती है पिच. पिच भी एक कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है. सो हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच. ठीक है. फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द पिच. ठीक है. Thus, a high-pitched sound corresponds to more number of compressions and rarefactions passing a fixed point per unit time. हम इसमें देख सकते हैं ये लो पिच फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. लो पिच साउंड है. ठीक है. इसमें लो फ्रीक्वेंसी है. और ये हमारा हाई पिच साउंड है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है. आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी ज्यादा में ज्यादा ऑसिलेशंस है पर यूनिट टाइम, और फ्रीक्वेंसी जब कम होती है तो कम ऑसिलेशंस है पर यूनिट टाइम. ठीक है. उसी टाइम में जैसे अगर आप इस टाइम तक देखो, यहाँ ज्यादा हो गई ऑसिलेशंस और यहाँ पे कम हुए. राइट. ओके. नेक्स्ट वी सी like objects of different sizes and conditions, they vibrate at different frequencies to produce different sounds, having different values of pitches. ठीक है. Magnitude of maximum disturbance in a medium on either side of the mean value is called the amplitude. Amplitude को आप कैपिटल A से डिनोट करोगे. ठीक है. जैसे हमने अभी देखा था एम्पलीट्यूड. ठीक है. फॉर साउंड एम्पलीट्यूड की यूनिट होगी डेंसिटी या प्रेशर की, जो भी आप केस कंसिडर कर रहे हो. ठीक. एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है लाउडनेस और सॉफ्टनेस. ये डिटरमाइन होता है एम्पलीट्यूड की वजह से. ठीक है. एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट. इफ वी स्ट्राइक द टेबल लाइटली तो हमें सॉफ्ट साउंड सुनेगा. ठीक है. Because we are producing a sound wave by the help of a smaller value of force. Okay. डायग्राम में भी आप देख सकते हो सॉफ्ट साउंड का इस तरह से है वेव डिस्टर्बेंस. लाउडर साउंड का आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड बढ़ गया. ठीक है. अगर हम लेस एनर्जी लगा रहे हैं तो लेस एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा बेसिकली. ठीक है. और अगर हम टेबल को हार्डली हिट करते हैं तो हमें एक लाउडर साउंड मिलेगा. राइट. ऐसा क्यों? क्योंकि साउंड वेव spreads out from its source. Okay, as it moves away from the source, its amplitude as well as loudness will decrease. So louder sound can travel a larger distance as it is associated with high energy. Okay, so हमने wave shapes अभी देखी loud और soft sound की of the same frequency. Next is quality or timbre of sound. ये कैरेक्टरिस्टिक होती है which enables us to distinguish one sound from other having same pitch and loudness. Pitch और loudness same है, फिर भी हम दो sounds को कैसे different बोल सकते हैं? By the help of quality or timbre. So sound which is more pleasant is said to be of a rich quality. Sound of a single frequency क्या बोलते हैं? उसे tone बोलते हैं हम. ठीक है. Sound which is produced due to a mixture of several frequencies is called a note. ठीक है. And is pleasant to listen. Noise क्या होता है? Unpleasant to the ear. Music is pleasant to hear and is of rich quality. Right? Questions इसमें कैसे put up होते हैं?
like which wave property determines loudness, pitch, right? ये आप बता सकते हो, अभी हमने पढ़ा है. Next is guess which sound has a higher pitch, guitar or a car horn. Can you think of it? Just think of it and post it in the comment section. Next is speed of sound. So speed of sound is defined as the distance which a point on a wave like compression or rarefaction travels per unit time. ठीक है. स्पीड को हम कैसे लिखेंगे? और डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव अपॉन कैपिटल टी टाइम पीरियड. ठीक है. 1/t किसके इक्वल था? न्यू के, फ्रीक्वेंसी के. तो लैम्डा इंटू न्यू भी लिख सकते हैं. सो v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू. स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू frequency. Speed of sound will remain the same for all frequencies in a given medium under the same physical conditions. Right? अब हम देखते हैं इसमें किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं. ऐसे न्यूमेरिकल्स पुटअप होते हैं, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है. ठीक है. तो हम इससे स्पीड निकाल सकते हैं. यस, वी नो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू. मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, यूनिट देख लेंगे. 35 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एसआई यूनिट, इंटू किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कर देंगे, 2000 हो जाएगा ये. तो 700 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल? 1.5 किलोमीटर. तो स्पीड पता है, डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर को मीटर में करेंगे 1500 मीटर्स. तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी विल गिव यू द टाइम, दैट इज 2.1 seconds. राइट. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव. बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो. ठीक है. हाउ आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू स्पीड. अभी हमने ये रिलेशन देखा है. स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव whose frequency is this much and speed is this much. ठीक है. हमें पता है स्पीड किसके इक्वल है? स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है. हमें क्या क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है and distance, basically frequency is given, speed is given. ठीक है. तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा इस इक्वेशन के थ्रू? लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन न्यू, ऐसा लिख सकते हैं. राइट. v कितना गिवन है इस केस में? 440. v इज 440. हम चेक करेंगे एसआई यूनिट्स में ही है. और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 220. राइट. So this gets cancelled out. तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 meters. So 2 meters is the wavelength. Right? Next we see the fourth question. ये भी एक numerical है. A person is listening to a tone of 500 hertz sitting at a distance of 450 meter from the source of the sound. Okay. What is the time interval between successive compressions from the source? So basically we are having frequency here. ठीक है. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज. ओके. तो इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. यस. सो 500 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी है. टाइम पीरियड क्या होता है? 1/न्यू. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 1/न्यू इज गोइंग टू बी 1/500. ठीक है. यूनिट क्या होगी? सेकेंड्स. सो अगर हम इसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दें तो ये 2 मिली सेकेंड्स आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई होके. ओके. सो टाइम पीरियड इज 2 मिली सेकेंड्स और सक्सेसिव कंप्रेशंस में कितना टाइम हो जाएगा? 2 मिली सेकेंड्स इज द आंसर. राइट. नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया. इट्स कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. ठीक है. कई बार लाउडनेस और इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं बट दे आर नॉट द सेम. Loudness is the measure of response of the ear to the sound. ठीक है. Even when two sounds are of equal intensity, we may hear one as louder and the other simply because our ear detects it better. Right. Next is distinguish between loudness and intensity. You can define as we gave here. Right. Next is speed of sound in different media. See, sound propagates through a medium at a finite speed. Okay. Sound of a thunder is heard a little later than the flash of light is seen. Okay. So we can say like sound travels with a speed which is much less than of light. Light तो बहुत जल्दी आ जाती है.
साउंड की मीन्स जो साउंड आती है लाइटनिंग की वो थोड़ी लेट आती है। तो काफी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है मीडियम की स्पीड ऑफ साउंड। ओके, सो ज्यादा डिपेंडेंसी इसकी हायर क्लासेस में हम स्टडी करेंगे, अभी जस्ट एक बेसिक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगी टेम्परेचर ऑफ मीडियम पे। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। किसी भी मीडियम में एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर स्पीड विल इंक्रीज। ठीक है, जैसे एयर है, एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड इज 331 मीटर पर सेकेंड और 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकेंड, बढ़ गई ना, राइट। और लाइक डिफरेंट मीडिया में लाइक 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या स्पीड है साउंड की, ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन टू अस। तो आप देख सकते हो गैसेस में कम है, फिर लिक्विड्स में थोड़ी ज्यादा है, सॉलिड्स में और ज्यादा है, राइट। So a question is asked, in which of the three media, air, water or iron, does sound travel the fastest at a particular temperature? तो solids में basically, तो solid में क्या है इधर, iron, iron में maximum speed होगी, right? Next topic is reflection of sound. See, sound bounces off a solid or a liquid like a rubber ball bounces off a wall. ठीक है, like light, sound also gets reflected. ठीक है, at the surface of a solid or liquid and follows the same laws of reflection जो आपने earlier classes में पढ़े थे light के लिए। ठीक है, the directions in which the sound is incident and is reflected, they make equal angles with the normal to the reflecting surface at the point of incidence and the three are in the same plane। जो हम light में पढ़ते थे law, ये वही उसी टाइप से अप्लाई होता है। An obstacle of large size which may be polished or rough is needed for the reflection of sound, right? Next is the concept of echo. ठीक है, echo क्या होता है? If we shout or clap near a suitable reflecting object such as a tall building or a mountain, so we will hear the same sound again a little later. ठीक है, this sound which we hear is called an echo. So sensation of sound persists in our brain for about 0.1 seconds. To hear a distinct echo, the time interval between original sound and reflected one must be at least 0.1 seconds. ठीक है, तो अगर आप स्पीड ऑफ साउंड लेते हो 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस इन एयर, so sound must go to the obstacle and reach back to the ear of the listener on reflection after 0.1 seconds. So the total distance covered by sound from the point of generation to the reflected surface and back should be at least 34.4 meters. So for hearing distinct echoes, minimum distance of obstacle from the source of the sound must be half the distance. Basically 17.2 meters का distance होना चाहिए. Distance will change with temperature of air. Okay. Echo may be heard more than once due to successive multiple reflections भी हो जाते हैं. ठीक है. Rolling of thunder is due to the successive reflections of the sound from a number of reflecting surfaces like clouds, land. इसी वजह से आपको different sounds सुनाई देते हैं. Next one is the concept of reverberation. So a sound created in a big hall will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. कई बार repeated reflection that results in this persistence of sound it is called reverberation. So in an auditorium or a big hall, excessive reverberation is highly undesirable. To reduce this, roofs and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbent materials like compressed fiber board use कर सकते हैं, rough plaster or draperies. Seat materials are also used on the basis of their sound absorbing properties, right? Next is a numerical. A person clapped his hands near a cliff and heard an echo after 2 seconds. Okay, तो basically यहाँ पे अगर he is clapping the hands और यहाँ पे अगर cliff is there, ठीक है, तो क्या होगा, साउंड पहले ऐसे जाएगी, ठीक है, और फिर वापस आएगी, तो इस पूरे प्रोसेस में 2 seconds लग रहे हैं, राइट। What is the distance of the cliff from the person if the speed of sound is this much? तो ये हमारा टाइम है बेसिकली, ओके, और हमें वेलोसिटी गिवन है, तो डी वी हैव टू फाइंड आउट, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, सो 346 इंटू 2, ठीक है,
पर ये कौन सा डिस्टेंस होगा? दिस डिस्टेंस विल बी, सपोज x, ये x गया यहाँ पे और फिर y वापस आया, x प्लस y जो है हमारा वो d के इक्वल होगा, ठीक है। तो बेसिकली x और y इक्वल ही होंगे, सेम डिस्टेंस होगा, तो बेसिकली x अगर हमें फाइंड आउट करना है तो d/2 हो जाएगा, ठीक है। 346 ये आंसर आ जाएगा इन मीटर्स, राइट। Next, let us see this question. An echo is heard in 3 seconds. What is the distance of the reflecting surface from the source given that speed is this much? Same type का ही question है. इस केस में हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, इंटू 3. तो ये डिस्टेंस होगा जाने का और वापस आने का, ठीक है। तो सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा इसका हाफ, एंड यूनिट विल बी मीटर्स, right? Next topic is uses of multiple reflection of sound. So a megaphone and a horn are shown here, right? Megaphones are loud hailers, horns, musical instruments like trumpets and shehnais are all designed to send sound in a particular direction without spreading in all the directions. ठीक है, कुछ particular direction में ही इसकी sound propagate करेगी. So in these instruments, a tube followed by a conical opening, it reflects sound successively to guide most of the sound waves from the source in the forward direction towards the audience. ठीक. Second is stethoscope. Stethoscope medical instrument होता है which is used to listen to the sounds produced within the body, mainly in the heart or lungs. So in stethoscopes, the sound of the patient's heartbeat reaches the doctor's ears by multiple reflection of sound. तो इस तरह से साउंड इस तरह मल्टीपली रिफ्लेक्ट होके जाती है. Next is generally the ceilings of concert halls, conference halls or cinema halls are curved so that the sound after reflection reaches all the corners of the hall. इस तरह की डायरेक्शन होती है. Sometimes a curved soundboard may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from soundboard it spreads evenly across the width of the hall. ठीक है, तो इस तरह से कर्व्ड सीलिंग फॉर अ कॉन्फ्रेंस हॉल भी है. और अगर साउंड बोर्ड होता है, वी कैन सी साउंड बोर्ड है सोर्स ऑफ साउंड, सो इट्स स्प्रेडिंग ऑल अराउंड, राइट. सो अ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाई आर द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स कर्व्ड, सो दिस रीजन यू कैन गिव. ये सारे रीजनिंग में आते हैं ये वाले पार्ट्स, ओके. नेक्स्ट इज द रेंज ऑफ हियरिंग. सो ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स कहाँ से कहाँ तक होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ओके. And children under the age of 5 and some animals like dogs, they can hear up to 25 kilohertz also. Okay. 1 kilohertz is basically 1000 hertz. And as people grow older, like their ears become less sensitive to higher frequencies. So sounds of frequencies below 20 hertz, they are called infrasonic sound or infrasound. If we could hear infrasound, we would hear the vibrations of a pendulum, just as we hear the vibrations of wings of a bee. Okay. Rhinoceros जो होते हैं, they communicate using infrasound of frequency as low as 5 hertz. Whales and elephants, they produce sound in infrasound range. It is observed that some animals get disturbed before earthquakes. So earthquakes, they produce low frequency infrasound before the main shock waves begin, which possibly alert animals. ठीक है? And frequencies higher than 20 kilohertz are called ultrasonic sound or ultrasound. Ultrasound is produced by animals like dolphins, bats, and porpoises. Moths of certain families are very sensitive to hearing equipment. Okay, they have very sensitive hearing equipment, and these moths can hear the high frequency, like squeaks of the bat, and know when a bat is flying nearby, and they are able to escape the capture. Rats also play games by producing ultrasounds. Okay. Hearing aid. So people with hearing loss may need a hearing aid. तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है. Hearing aid, it receives sound through a microphone. Microphone will convert the sound waves to electrical signals and they are amplified by an amplifier. The amplified electric signals are given to the speaker of the hearing aid and the speaker converts amplified electric signal to sound and sends it to the ear for clear hearing. Right? So what is the audible range of average human ear? You know this now. Range of frequencies for infrasound, ultrasound. You know this, right?
Last is the applications of ultrasound, very important. Ultrasound high frequency waves होते हैं. They are able to travel along well defined paths even in the presence of obstacles. तो इसे इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं और मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज क्लीनिंग में यूज करते हैं, टू क्लीन द पार्ट्स विच आर हार्ड टू रीच, लाइक स्पाइरल ट्यूब, odd shaped parts, electronic components. ठीक है. तो objects are cleaned, like the objects which you have to clean, you have to place it in the cleaning solution and ultrasonic waves you can send into the solution. High frequency की वजह से particles of dust, grease and dirt, they get detached and drop out and objects are thoroughly cleaned. Next इसे use करते हैं detection of cracks and flaws in metal blocks. ठीक है, in construction basically. So like big structures जैसे buildings, bridges, ठीक है, machines and also scientific equipment. So cracks or holes inside the metal blocks which are invisible from outside reduces the strength of the structure. So they are allowed to pass through like these waves to the metal block and detectors are used to detect transmitted waves. तो अगर छोटा सा भी defect होता है तो ultrasound will get reflected back indicating presence of a defect. ठीक है. इसको आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एक डिफेक्ट था, बाकी वेव्स तो चली गई आराम से, बट ये वाली जो हमारी अल्ट्रासाउंड वेव है ये वापस आ गई, राइट. Ordinary sound of longer wavelengths cannot be used for such purpose and it will bend around the corners, ठीक है, and enter the detector. Next is ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and form an image of the heart. इसको हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है. और होता है अल्ट्रासाउंड स्कैनर, ये इंस्ट्रूमेंट होता है विच यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है. So image can be taken for organs like liver, gallbladder, uterus, kidney. It helps in detecting abnormalities like stones in gallbladder, kidney and all. ठीक है. So ultrasonic waves ही travel करती हैं through the tissues of the body and they get reflected from a region where there is a change of tissue density. So this is the concept which is used here. So these waves are then converted into electrical signals that are used to generate images of the organ. ठीक है. तो अब इन images को हम display कर सकते हैं on a monitor और print or maybe printed on a film. इस technique को बोलते हैं ultrasonography. It is used for examining the fetus during pregnancy to detect any congenital defects or growth abnormalities. और अल्ट्रासाउंड को आप फॉर ब्रेकिंग स्मॉल स्टोन्स आल्सो यू कैन यूज which are formed in the kidney, ठीक है, into fine grains and these grains can later be flushed out of the body, right. So here comes a summary of all the points like which we have discussed in this chapter. Sound is produced due to vibration of different objects. It travels as a longitudinal wave through a material medium, ठीक है. कैसे ट्रैवल करता है? कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के थ्रू, ठीक है. साउंड प्रोपगेशन में एनर्जी ऑफ द साउंड ट्रैवल करती है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम नहीं ट्रैवल करते, ठीक है. चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम वन मैक्स वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू मैक्स वैल्यू, इट मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है. फिर हमने वेवलेंथ की डेफिनेशन देखी, टाइम पीरियड, ओके, फ्रीक्वेंसी, देन रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ओके. स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम एंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज ट्रैवलिंग. फिर आ जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ओके. डिस्टिंक्ट साउंड हियर करने के लिए एटलीस्ट कितना होना चाहिए टाइम बिटवीन ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड? 0.1 सेकेंड्स, ठीक है. फिर हमने देखा कंसेप्ट ऑफ रेवर्बरेशन, राइट. देन वी सॉ प्रॉपर्टीज लाइक पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, ओके. लाउडनेस आ गया फिर, ठीक है. देन कम्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड, audible range 20 Hz to 20 kilohertz, then the concept of infrasonic and ultrasonic, okay, and then ultrasound. So all these points we have discussed in detail. You can go through these points to get a quick summary of the chapter, right. So now we come on to the exercises. First question is, what is sound and how is it produced?
The sound is a form of energy that propagates as mechanical waves through a medium. It is produced when an object vibrates, okay, causing the surrounding medium like air to vibrate as well. So this will create compressions and rarefactions that travel as sound waves, right? Second is describe how compressions and rarefactions are produced in air near a source of sound. So when an object vibrates forward, it compresses air particles, creating a compression or a high pressure region. When it moves backward, it creates a rarefaction, that is low pressure region, by pulling air particles apart. These alternating compressions and rarefactions they travel through the medium as sound waves. तो इसका डायग्राम आप बना सकते हो. It is like shown in the description of the chapter. Okay, same diagram आप यहाँ पे introduce कर सकते हो. Next is why sound called longitudinal wave. ये हमने देखा था क्योंकि particles of the medium vibrate parallel to the direction of wave propagation. That's why, right? Fourth question is like which characteristic of the sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room. ठीक है, quality or timbre of sound, okay, it will help. It depends on waveforms and overtones present. हर person की जो voice को unique बनाता है, that is quality or timbre, okay. Fifth question is flash and thunder are produced simultaneously, but thunder is heard a few seconds after the flash is seen. Why? This is because light की जो speed है वो है 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Sound की approximately 340 meter per second है in air. तो साउंड की काफी कम है ना स्पीड एज कम्पेयर टू लाइट, तो लाइट ट्रैवल करके जल्दी आ जाती है तो फ्लैश पहले दिख जाता है, और थंडर की साउंड आने में टाइम लग जाता है इसलिए वो लेट आता है, राइट. Next we come on to the sixth question. It says a person has a hearing range of 20 Hz to 20 kilohertz. ठीक है. What are the typical wavelengths of sound? ठीक है. In air corresponding to these frequencies. So basically हमें wavelength की range निकालनी है. तो first wavelength जो आएगी lambda 1 ले लो. ठीक है. Lambda is basically velocity upon mu. तो म्यू वन, दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है ना पहले वाली फ्रीक्वेंसी के लिए, तो वेलोसिटी कितनी है हमारी 344 मीटर पर सेकेंड. यूनिट्स का ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट्स में ही लेना है, और 20 हर्ट्ज है. ठीक है. सो व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी 17.2 मीटर्स. ठीक है. तो पहली वेवलेंथ आ गई 17.2 मीटर्स. सेकेंड वेवलेंथ किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी 2. तो वेलोसिटी तो वही है, सेम रहेगी 344, और नीचे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगी. तो 20 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में करेंगे तो इनटू 1000 करना है. ठीक है. सो 20,000 इट विल बी, राइट. तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.0172 मीटर्स. 172 मीटर्स. ठीक है. तो रेंज ऑफ वेवलेंथ ये हो जाएगी, राइट. So here we come on to the question number 7. Two children at the opposite ends of an aluminium rod. ठीक है. One strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the second child. ठीक है. Very good question. तो basically time हमें रेशियो क्या निकालना है? टाइम टेकन बाय द साउंड वेव, ठीक है, इन एयर. तो इसको टी ए से डिनोट कर लेते हैं, और टाइम टेकन फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम को ए एल से डिनोट कर लेते हैं. तो टाइम आपको पता है बेसिकली क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस डी ले लो, अपॉन स्पीड या वेलोसिटी. ठीक है. वेलोसिटी इसमें वेलोसिटी इन एयर ले लेते हैं, डिस्टेंस तो सेम ही होगा दोनों केसेस में, सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, अपॉन वेलोसिटी इन एल्यूमिनियम. ठीक है. डी और डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? वेलोसिटी फॉर एल्यूमिनियम अपॉन वेलोसिटी फॉर एयर. हमने अभी चैप्टर पढ़ते हुए एक टेबल देखा था जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड गिवन थी डिफरेंट मीडिया में. तो उस केस में हमारा एल्यूमिनियम के जो वैल्यू गिवन है दैट इज 6420. ठीक है. और जो हमारा एयर के लिए वैल्यू गिवन है दैट इज 346. ठीक है. नाउ इफ वी सॉल्व दिस we are going to get the result as this will be equal to 18.55. So this is the ratio you are going to
get in this particular case, right? Now comes the eighth question. The frequency of a source of sound is 100 hertz. How many times does it vibrate in a minute? ठीक है, 100 hertz का मतलब क्या है कि 100 times per second. ठीक है, 1 second में it's vibrating 100 times. तो 1 minute क्या होता है? 1 minute is basically 60 seconds. ठीक है, तो 60 seconds में कितनी बार वाइब्रेट होगा? 60 into 100. ठीक है, तो 6000, right? तो 6000 will be the number of vibrations in 1 minute. Let's come on to the ninth question. Does sound follow the same laws of reflection as light does? What do you think? Yes. Okay. Explain how. Like angle of incidence equal to angle of reflection होता है, and incident wave, reflected wave, and normal to the reflecting surface, they all lie in the same plane. So that way it follows. Okay. 10th question is, when a sound is reflected from a distant object, an echo is produced. ठीक है, so distance between reflecting surface and source of sound of production, let's say it's remaining the same. So do you hear echo sound on a hotter day? That is the thing. So on a hotter day, speed of sound will increase, क्योंकि हमने देखा था स्पीड बढ़ती है जैसे जैसे टेम्परेचर ऑफ मीडियम बढ़ता है. ठीक है, सो इफ द स्पीड इंक्रीजेस, मिनिमम डिस्टेंस फॉर हियरिंग एन इको जो हमारा 17.2 meters था, इट विल चेंज. ओके, potentially making the echo harder to perceive, right? So here's the 11th question. Give two practical applications of reflection of sound waves. तो ये सोनार में यूज होता है टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स. ओके, इन द शिप्स यू यूज इट. ठीक है, सेकंड स्टेथोस्कोप में यूज होता है, डॉक्टर्स यूज इट टू एम्पलीफाई द इंटरनल बॉडी साउंड्स. ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं. इट्स अ न्यूमेरिकल. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 meters high into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? ठीक है, G is given, speed of sound is given to us, right? So how we do this? This is a numerical, we have to solve it out. ठीक है, so height basically कितनी given है? Height is your 500 meters. Okay, G और speed of light इनकी भी value हमें given है, right? So you know S is distance, इस केस में H हो जाएगा. H is equal to UT plus half AT square. ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन G के इक्वल है, so you can write it down half GT square, right? तो इनिशियल स्पीड इस केस में कितनी होगी? इट्स एट रेस्ट ओनली, तो ये 0 हो जाएगा टर्म. ठीक है, तो यहां से हमारी जो T की वैल्यू आएगी, T कितना हो जाएगा? 2H. ठीक है, 2 इधर चला जाएगा, 2H अपॉन G, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कंप्लीट पार्ट का, राइट? ये हमारी T की वैल्यू आ जाएगी. तो H और G की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो टाइम आ जाएगा कितना हमारा? 10 seconds, राइट? सो दिस इज द टाइम टू फॉल. ये हो गया टाइम टू फॉल. अब है टाइम फॉर साउंड टू ट्रेवल बैक. तो साउंड कितना टाइम लेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 500 meters. स्पीड कितनी है? 340 meter per second. ठीक है, तो इतने सेकंड्स का टाइम आ जाएगा फॉर साउंड. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.47 seconds. ठीक है, तो 10 seconds तो लिए स्टोन ने ड्रॉप होने में, और 1.47 seconds लिए साउंड को ट्रैवल बैक करने में. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा जब दोनों को ऐड करेंगे? तो 11.47 seconds. So this is the final answer. This solves the question. So let us see the 13th question. It's a numerical. A sound wave travels at a speed of 339 meters per second. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? ठीक है, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके इक्वल होती है? हमने क्या रिलेशन देखा था? वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ हो जाएगी. ठीक है, तो इस केस में वेलोसिटी कितनी है? 339 मीटर पर सेकेंड. SI यूनिट्स में चेक कर लो. ठीक है, अपॉन लैम्डा 1.5 सेंटीमीटर है, तो मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे
तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 0.015 मीटर्स। ठीक है, तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी इन द यूनिट ऑफ हर्ट्ज। तो ये आएगा 22600। ठीक है, 22600 यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज, राइट। नेक्स्ट इज, इसमें और क्या पूछा है, विल इट बी ऑडिबल। तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसको आप किलोहर्ट्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 22.6 किलोहर्ट्ज हो जाएगी। तो ये ऑडिबल तो नहीं होगी फॉर द ह्यूमंस, बिकॉज ऑडिबल रेंज तो हमारी क्या थी, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। तो ये 20 किलोहर्ट्ज से एक्सीड कर रही है, तो इट्स नॉट ऑडिबल, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज रेवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। ओके, ये हमने पढ़ा था अभी। Reverberation is the persistence of sound in a room due to multiple reflections from walls, ceilings, and other surfaces. So it causes prolonged echoing and reduces speech clarity. तो reduction methods क्या हो सकते हैं? Using soft materials like carpets, curtains, upholstered furniture to absorb sound. ठीक है? Installing sound absorbing panels or acoustic tiles on walls and ceilings. And using irregular surfaces to scatter sound waves instead of reflecting them. ठीक है, ये सारे हम मेथड्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 which says what is the loudness of sound and what are the factors on which it depends. So loudness is the perceived intensity of sound by the human ear. It's measured in decibels. Factors which affect loudness are amplitude of the sound waves. ज्यादा amplitude होगा तो sound louder होगा, ठीक है। Distance from the source, loudness decreases as distance increases. Medium of propagation, sound is louder in solids than in air. Then sensitivity of the ear, okay, different people perceive loudness differently, right. 16th is how is ultrasound used for cleaning. See, ultrasonic cleaning, it involves placing objects in a cleaning solution and exposing them to high frequency ultrasound waves, which are above 20 kilohertz. Sound waves, they create tiny bubbles or cavitation in the liquid which collapse and produce shock waves that dislodge dirt, grease and contaminants. So it's used in cleaning jewelry, medical instruments, electronic components and delicate machinery parts, right? Now we come on to the last question, that is the 17th one. Explain how defects in a metal block can be detected using ultrasound. Very good question. So बेसिकली हमने देखा था अभी कि डिफेक्ट्स को हम कैसे करते हैं आइडेंटिफाई। हम एक प्रिंसिपल इसमें जो यूज करेंगे वो है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स दे ट्रैवल थ्रू द मेटल एंड रिफ्लेक्ट बैक इफ दे एनकाउंटर अ फ्लॉ और अ डिफेक्ट। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहेगा इसमें, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड इनटू द मेटल। इफ मेटल इज फ्लॉलेस, वेव्स पास थ्रू एंड आर डिटेक्टेड ऑन द अदर साइड। ठीक है, इफ देयर इज अ क्रैक और डिफेक्ट, सम वेव्स रिफ्लेक्ट बैक अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। Time taken for reflections, it helps to determine the location and size of the defect. ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन मेनली इंडस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल में होता है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में होता है, for inspecting engine parts, bridges and pipelines. So with this we complete the exercises and the chapter. Thanks for watching the video and stay tuned to my channel Learn with Nisha ji. If you have not subscribed yet, do subscribe the channel for regular updates.